We'll first discuss the question of yesterday related to two-sided and one-sided errors. Furniture purchased on credit was recorded in purchase book. Furniture purchased on credit is recorded in purchase book. This is a two-sided error. You can switch on your videos now. Now, why it is a two-sided error? Because you have purchased the furniture, you should have recorded it in what? In the journal proper. But you recorded that in the purchase book. So you should have passed the entry as furniture account debit to supplier account. But when you have recorded that in purchase book, instead of debiting furniture, you have debited purchase account. So two different accounts are getting affected with the same amount or not? Yes or no? क्योंकि सप्लायर एनीवेज परचेज बुक में भी अगर तुम रिकॉर्ड करोगे तो सप्लायर को तो क्रेडिट करोगे ही करोगे. Therefore, this will be considered as a two-sided error. How many of you had written two-sided? See, remember one thing, when you have made the mistake in recording of the transaction, that will always be considered as a two-sided errors. Why? Because posting follows the recording. आपने जैसा रिकॉर्ड किया है वैसा ही आप उसका पोस्टिंग करने वाले हो. तो अगर आपने रिकॉर्डिंग गलत की तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इवन द पोस्टिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड. And that's why the recording errors are always considered as the two-sided errors. Am I right? Yes or no? Next. Cash sales of rupees 12,000 was recorded at 10,200. Cash sales कहाँ record करना चाहिए था? Where do we record the cash sales? Anyone who can give the answer? Can unmute and give the answer. Go ahead, Aditya. Cash book. Hello. Hi, आवाज नहीं आ रही है तेरी. Cash book. Hello. तेरी आवाज नासा वालों ने छुपा ली. तेरे लिए वो ए वाला सिचुएशन है. Hello. जयश्री किधर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कैश सेल्स? कैश बुक. ये तेरी भी आवाज नहीं आ रही. क्या मेरी आवाज बंद है क्या? फिर एक मिनट रुको. एक मिनट. देयर इज सम प्रॉब्लम एट माय एंड. मेरे बच्चे मेरे मन के सच्चे, उन्होंने म्यूट कर रखा था. कैश सेल्स. यस आदित्य, गो अहेड. Cash book. जयश्री, इज ही करेक्ट? हाँ. सो कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग टू सेल्स कैश कॉलम. अब वहां रिकॉर्ड करते समय 12,000 की जगह हमने कितना रिकॉर्ड किया? 10,200. तो अगर 10,200 रिकॉर्ड किया तो पोस्टिंग भी सेल्स अकाउंट को 10,200 की ही होगी. Because unless otherwise provided, if you have recorded something wrong, even the posting thereof is done wrong. Write down the point to remember. PTR. Unless otherwise provided, if a transaction is recorded wrong, then it is
सिद्धि, नाविन्य, संयोगिता अभी तक नींद में गए तुम लोग? Even the posting thereof वीडियो ऑन नहीं किया इसलिए पूछ रहा था. Even the posting thereof will be wrong, comma, as posting follows the recording. As posting follows the recording. Full stop. That means all recording errors are two-sided errors. All recording errors are two-sided errors. Am I right? Yes. Next one. Goods sold on credit rupees 15,800 was debited. एक मिनट, अगला पन्ना डाउनलोड हो रहा है. To customers account at 18,500. गुड्स कितने के बेचे रहे? 15,800 के. Now, if you have recorded a transaction in the sales book, goods sold on credit means it will be recorded in sales book only or not? Rapsana, is that right? Goods sold on credit will be recorded in sales book, right? So if you have recorded the transaction in your sales book, if this is my Chota sales book, in this Chota sales book, I have recorded customer as how much? 15,800. That means in the total of my sales book, in my total of sales book, this 15,800 only is included or not? Are you able to observe this? So if in my total of sales book, 15,800 is included, that means sales account will be credited. Sales account on to the credit side. I am going to write what? By Sundris. Rupees 15,800. है ना? Assuming that there are no further transactions. So sales account is credited with 15,800, but they've said what? Customer account is debited by 18,500. हमेशा याद रखना, जब भी आप सब्सिडियरी बुक के थ्रू ट्रांजैक्शंस को चेक करते हो, तो वन ऑन वन ट्रांजैक्शन को चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि सेल्स बुक का पोस्टिंग इंडिविजुअली होता है डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव कस्टमर. तो यहां आपने कस्टमर को डेबिट तो किया, पर डेबिट गलत अमाउंट से किया. यस और नो? So in my customer account onto the debit side, I have written what? Two sales. 18,500. Are you able to understand this? Read the statement once again. A credit sale of 15,800 to a customer is debited to customer's account at 18,500. बराबर है? It being a credit sale, it will first be recorded in our sales book. In the sales book, you'll be recording it at 15,800 because credit sale हुआ 15,800 का है.
अगर मैंने सेल्स बुक में 15,800 रिकॉर्ड किया है तो मेरे सेल्स बुक के टोटल में कितना इंक्लूड होगा? 15,800 ओनली. If my sales book total is been including 15,800, means the sales account for the given transaction is credited by rupees 15,800 only or not? Are you understanding it now? But when I took this transaction for debiting to the customer account, वहां पे मुझे धक्का लगा और धक्का लगने की वजह से 5 का 8 का 5 हो गया. The values got replaced. And there, instead of posting it at 15,800, I posted at 18,500. So in the given transaction, one effect of the transaction is correct, but the second effect has gone wrong. So this will become what? One-sided error. कुछ समझ आ रहा है कि सब हवा में जा रहा है? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? सर रुको रुको, हमको जरा नींद में से बाहर आने दो, बाद में बताते हैं पल्ले पड़ रहा है या नहीं. या आप ना सुबह वाले लेक्चर बंद करो. हम लोग ना इसके अगेंस्ट अभी मोर्चा निकालने वाले हैं. हम लोग अर्नब गोस्वामी को कंप्लेंट करेंगे, ये मास्टर रोज हमारी नींद खराब करता है. Isn't it? नहीं, नेक्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूं तुम्हारे लेक्चर ना रात को 10 से 11 लेगा मैं अभी. दैट इज बेटर ना? हाँ देखो देखो, नवीन एकदम खुश. यस सर, बिल्कुल ट्राई करेंगे अपन. रात को 10 से 11 नहीं, 10 से 1 के 3-4 सेशन लेंगे जब फाइनल अकाउंट रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. लेट नाइट सेशंस, यू नो, it will be fun. In fact, I used to take the query sessions for this April and May batch. उनके क्वेरी सेशंस मैंने एक बार लिया था रात को 9 से नहीं, रात को 10 से लेके सुबह 6 बजे तक. that was a different kind of feeling altogether, you know. मैं अंदर लेक्चर ले रहा था और मेरे बच्चे बाहर नाइट आउट कर रहे थे. That was the kind of scenario. होता है, क्या करें आप. असो, the next one, return of goods from customer was debited to customer account. अच्छा, उसके बाद 6th वाला है. ओके. Return of goods from customer was debited to customer's account. Return of goods from customer कहां रिकॉर्ड होगा? भावना, goods returned from customer, in which subsidiary book will you record it? Sir, return book. Which return book? Return inward or return outward? Sir, return inward. Return inward book, that is sales return book. Correct or not? Sales return book का तुम्हारा पोस्टिंग क्या होता है रे? भावना, तेरे को याद है क्या? देख देख, बुक में लिखवाया था मैंने. क्लास में होते हैं ना हम लोग, इमीडिएटली पन्ने पलटना चालू कर देते हैं. रुको सर बताते हैं, 2 मिनट. सेल्स रिटर्न बुक का पोस्टिंग इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ सेल्स बुक. भावना, इसीलिए मैं बोलता हूं लॉजिकली पढ़ाई किया करो, बाय हार्ट नहीं करने का. When you do the studies logically, you automatically get the things faster. You understand the things faster. जब मैं सेल्स का पोस्टिंग कर रहा हूं, रिटर्न इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दैट और नॉट? So sales return book ka posting will be exactly reverse. That is, individual transactions will be posted to the credit of respective customer and total will be posted to the debit of sales return account. Yes or no? तो यहां मैंने रिकॉर्ड किया कस्टमर. एक तो मैं हैंडराइटिंग की जगह ड्राइंग जब होना चालू हो जाती है ना, लेट्स से 1000 रुपए के गुड्स वापस आए थे. अब
जब हम लोग इस बुक का पोस्टिंग करते हैं, what is the posting effect that I said? Individual transactions to the credit of respective customer and total to the debit of sales return account. Yes or no? So this 1000 must be included in the total of this or not? Are you able to understand this? That means sales return account is being debited by rupees 1000. अब सेकंड इफेक्ट क्या होना चाहिए था? टू कस्टमर अकाउंट 1000, पर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है तुमको? was debited to customer account. Debited to customer मतलब क्या? कस्टमर के अकाउंट में हमें ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, पर हम लोग जब सेल्स रिटर्न बुक से ये ट्रांजैक्शन लेके निकले, जाते जाते हम लोग कस्टमर के क्रेडिट साइड में जा रहे थे, पर पहले डेबिट मिल गया, हम लोग थक गए, वहीं पर रिकॉर्ड कर दिया. So instead of crediting customer, we debited customer's account. Again, in this transaction also, one effect of the transaction is correct or not? मैं अब तक के रेक्टिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं. हम लोग इस समय पे सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये एरर क्या है. सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो करेक्ट डेबिट हुआ है नहीं. सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, वो डेबिट किया या नहीं? हाँ. अब कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसके अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय हमने डेबिट कर दिया. मतलब one effect of the transaction is correct, but the second effect of the transaction has gone wrong or not? So again it will be called as what? A one-sided error. Did you all understand this? Yes or no? Bhavna? Huh. If you could observe this error and the previous one, both the errors took place at the time of posting of the transaction or not? जब हम ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक से लेजर अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे, उसी समय पे ये एरर्स हुई है नहीं? और इन दोनों के दोनों एरर्स में हमारा एक इफेक्ट करेक्ट और दूसरा रॉन्ग है, मतलब बोथ दीज एरर्स आर वन साइडेड एरर्स. Does that mean, can I make a statement that my all posting errors are one-sided errors? I said, can I make the statement that all posting errors are one-sided errors? तुम लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो या नहीं? All posting errors are not the one-sided errors. Why? Because if the posting is done to a wrong account, Siddhi, if the posting is done to a wrong account, in that case, two different accounts are getting affected with the same amount or not? Suppose I sold the goods to Raman, but got it posted to the account of Chaman. चलो ऐसा समझते हैं. मान लो हमारे लाइव क्लासेस चालू हो गए, ऑलराइट, लाइव सेशंस चालू हो गए, फेस टू फेस सेशंस चालू हो गए. वैक्सीन आ गया मार्केट में, अभी तो बहुत हड़दंग बचा हुआ है, रोज स्टोरी चल रही है कि कौन पहला वैक्सीन लाएगा. Pfizer has already challenged the public that 10th or 11th December they'll be bringing the vaccine in US, right? तो मान लो वैक्सीन आ गया, हमारे फेस टू फेस लेक्चर चालू हो गए. अब जैसे फेस टू फेस लेक्चर चालू हो गए, नाविन्य आया क्लास में, सब नए नए बंदे मिल रहे हैं, सब नए नए लोग मिल रहे हैं, और जैसा प्रोपोर्शन यहाँ पे है वैसे लाइव बैच में भी, एकदम फाउंडेशन के बैच में भी वही प्रोपोर्शन है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज. अब हुआ यूं कि हमारे क्लास में सपोज कोई एक लड़की आ गई, मान लो उसका नाम है झुमरी,
राइट। और नाविन्य को झुमरी एकदम यस पसंद आ गई। नाविन्य देखो कैसे शर्मा रहा है बेचारा। तो अब नाविन्य ने क्या सोचा, चलो यार एक बार का बात करना है तो बात करने के लिए फूल देंगे। तो ये बंदा फूल लेके आया, क्लास में जा रहा था। अब झुमरी के पहले चंपा नाम की एक लड़की खड़ी थी, इसको वो भी पसंद आ गई, तो इसने चंपा को उठा के वो फूल दे दिया। अब झुमरी अंडर एक्सपेक्टेशन थी कि बस अब नाविन मुझ तक पहुंचेगा और फूल मिल जाएगा। वो देखो नाविन वीडियो बंद कर दिया, जाने दो सर, इतना शर्मा गया बेचारा। तो हुआ यूं कि इसने फूल झुमरी की जगह चंपा को दे दिया। फूल तो दिया ना। There are two different accounts getting affected or not? With the same amount, that is full. Yes or no? So in that case, in such situation, it will be considered as what? A two-sided error. Even though it is a posting error, but still it will be called as a two-sided error. पर इसके अलावा जो कुछ भी पोस्टिंग एरर्स होती है, those all are the one-sided errors. Did you understand what I said? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, लिखो पॉइंट टू रिमेंबर। नाविनी बोलता है सर कम से कम नाम तो अच्छे ले लेते आप। यस, ऑल पोस्टिंग एरर्स other than posting to a wrong account with the same amount, all posting errors other than posting to a wrong account with the same amount are one-sided errors. Are one-sided errors. प्रतीक्षा झोप कमी झाली वाटती. जाऊ देत सर, रोजच कमी होती, आता काय तुम्हाला सांगावं. घरचे लई खुश आहेत सध्या. त्यांना असं वाटतं आमची मुलं खूप अभ्यास करतात. सकाळी पण लेक्चर, दुपारी पण लेक्चर, संध्याकाळी पण लेक्चर. पुढच्या आठवड्यापासून तर 1 ते 7 खरोखर लेक्चर. Daily you have got the full session of 1 to 7 na? Because I'll be adding my lectures of accounts along with Abhishek sir. So you'll have some lectures from him, some lectures from me on daily basis. All right. हो सकता है 1 से 7 की जगह 1 से 8 या 1 से 9 भी हो जाए। तो फिर तो घर वाले बोलेंगे बेटा तुमको एक नया डेटा पैक दिलवा देते हैं हम लोग। नहीं, घर पे ब्रॉडबैंड लगवा देते हैं। घर वाले ब्रॉडबैंड नहीं लगवाते हैं, घर वाले बड़े होशियार है। तेरे को 3 जीबी डेटा चाहिए, मैं 3 जीबी डेटा वाला पैक दिलवाएगा, पर ब्रॉडबैंड नहीं लगवाएगा। ब्रॉडबैंड लगवाया, लिमिट खत्म हो जाता है, फिर वो अनलिमिटेड चले जाते हैं हम लोग। तो 3 जीबी डेटा रहा तो बराबर लेक्चर के लिए संभाल के रखता है बंदा कि इसमें लेक्चर अटेंड करने हैं। Isn't it? रिया खरं आहे ना? नाही सर, आमच्याकडे तर ब्रॉडबँड आहे. नाही गावाकडे असो. Next one, cash paid to supplier rupees 14,400 were credited to his account at 10,400. Again, were credited to his account. So it is a posting error again or not? Cash paid in your cash book you have recorded at 14,400, but while transferring the transaction to the account of creditor, you posted with the wrong amount. So this will become again a one-sided error. है ना? Next one, goods returned to supplier of rupees 50,200 remained to be posted. Partial omission. What did I say for one-sided error?
वन साइडेड एरर के लिए मैंने क्या कहा था? When one effect of transaction is given correct, but the second effect is either not given or is incorrect, then in that case it becomes a one-sided error or not? Yes or no? So accordingly, in this case, goods returned to supplier rupees 5,200 or 51,200 or 50,200, whatever is the amount, remain to be posted. Does that mean even the purchase return account is not being credited? परचेस रिटर्न अकाउंट को हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं क्या? नहीं, परचेस रिटर्न अकाउंट को हम लोग टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक पोस्ट करेंगे या नहीं? और उस टोटल में इस अमाउंट को तो इंक्लूड किया ही होगा, है ना? That means purchase return account is credited but supplier is not being debited. I repeat, purchase return account is credited but supplier account is not being debited. And there, because again, I'll repeat, whenever you are doing rectification, you have to think from the perspective of subsidiary books. आप अगर जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इस केस में आपने कहा होगा दिस इज अ टू साइडेड एरर बिकॉज यू विल बी प्रिज्यूमिंग दिस टू बी अ कंप्लीट ओमिशन, whereas this is not a complete omission, this is partial omission. One effect of the transaction is given, second effect of the transaction is not given. Are you getting my point right? हाँ जी आदित्य सर, सब ऊपर से जा रहा है सर, सच बताऊं मैं आपको तो. Are you able to understand now? I'm seriously asking this. हाँ. So it is again a one-sided error because we have to think from the perspective of subsidiary book and not from the perspective of journal entries. Am I right? Next, the debit side of discount column of cash book was totaled where totaled. अरे amount ही नहीं लिखी बेटा तूने. At rupees कितना है आदित्य? अमाउंट कितना है? 15,200. Sorry, 15,200. 15,200. Where they say, Raksana, they say chartered accountants are trained to love the figures, you know. And here you are missing out the whole figure. And that's not good. ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है इस समय पे सर, किसी का कोई फिगर पे फोकस नहीं है, सारे शेप में है. But still we need to focus at least on numerical figures. Chalo. So the debit side of discount column of cash book was totaled at rupees 15,200, whereas the actual discount allowed was 14,200. You have done the wrong totaling of the discount column. अब डिस्काउंट कॉलम का हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते हैं, डिस्काउंट कॉलम की टोटल हम लोग पोस्ट करते हैं या नहीं? ये सुनो, कैश बुक का पोस्टिंग इफेक्ट अगर याद होगा तो when we do the discount column, when we prepare the discount column in cash book, we do not do the balancing of it. Instead of that, we take the total and that total is posted to the ledger account. These errors are called as casting errors. The error in totaling of discount column or error in totaling of a subsidiary book are called as casting errors. Write on the note. Casting errors. A mistake in totaling of a subsidiary book a mistake in totaling of a subsidiary book or the discount column of cash book or the discount column of cash book is called as casting error.
total more than actual, full stop, total more than actual is called as overcasting, and if it is less than actual, it is undercasting. If it is less than actual, it is undercasting. अब ये समझ लो कि अगर मैंने रॉन्ग कास्टिंग की, मैंने अगर रॉन्ग टोटलिंग की किसी सब्सिडियरी बुक की, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है. My individual effects will be as it is, but my total has gone wrong. So one effect of the transaction is correct. Second effect is going wrong or not. So write down all casting errors. All casting errors are one-sided errors. All casting errors are one-sided errors. You people get that? Yes or no? So that's it for the day. Once again, you revise this all what we have done today. In our next session, we'll start with how do we rectify the errors? How do we pass the rectification entries? This is what we are going to talk about in the next session. So you need to just revise through these all things. Next session is going to be very important from the perspective of rectification. That will be on Friday. Tomorrow we are not going to have the session. Friday का भी मैं कल आपको confirm message कर दूंगा that in what way I'm going to take that lecture. All right. Thank you.